Yes, hi all the students. Yes, welcome to ACAT once again. And today we are going to take a passage which is based on book review. जनरली स्टूडेंट्स कैट में इस जॉनर पर आरसी पैसेज बहुत कॉमनली देखा जाता है मतलब यू मान के चलो कि हर स्लॉट में यू पीपल आर गोइंग टू हैव one passage which is based on book review and possibly I generally see students not very much comfortable with this particular genre. स्टूडेंट्स आरसी में बहुत अच्छी कमांड बनाने के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज इट्स नॉट ओनली इंग्लिश व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अस अल्टीमेटली वी विल हैव टू बिकम कंफर्टेबल इन अ जॉनर जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी possibly some students are comfortable in that so they will be able to handle the passages based on science and technology very easily but at the same time the same students may not be much comfortable in handling the passages of say philosophy or psychology. So what we people have to do is in the next 70-75 days, whatever time is left, हमें अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर अलग-अलग जॉनर्स को लेकर कंफर्टेबल होना है and the only way to become comfortable is to keep solving and reading articles and passages which are based on several genres. अगर स्टूडेंट्स हम लोग 10 पैसेजेस बुक रिव्यू के सॉल्व कर लें तो आई थिंक बुक रिव्यू से रिलेटेड कोई भी पैसेज हैंडल करना विल बिकम इजी फॉर अस. So welcome once again to AceCat. My name is Anil Chaudhary and students for the last 20 years, we have been training the students for CAT. And especially if I talk about myself, I was once a student of CAT and after that, almost that's now more than 20 years, 22 years in fact, मैं VARC बच्चों को पढ़ा रहा हूँ and रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में मैं काफ़ी मदद करता हूँ. एंड रीडिंग स्किल्स में स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर सिर्फ ट्यूटर की मदद से स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स एनहांस हो जाती है तो शायद मैं सभी बच्चों की करवा ही देता. बट ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू पीपल टेक इंटरेस्ट एंड व्हेन यू पीपल गिव टाइम. स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है to have a lot of patience. It's a game of patience. Reading skills we cannot develop overnight. इसलिए कोई स्टूडेंट अगर ये समझता है कि 2-4 पैसेजेस आप मेरे साथ सॉल्व करोगे और उससे पूरी आरसी हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देखता हूँ एज कैट के हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ओके जो पिछले 6 मंथ्स 8 मंथ से दे आर वर्किंग विद अस, उनकी रीडिंग स्किल्स में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस वी हैव सीन. ऐसे बच्चे जो बहुत सिंपल से सेंटेंसेस दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नाउ दे आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स टू इवन कैट लेवल क्वेश्चंस. So students anyway, I'll not say that just by watching this video, you will develop a very good mastery on handling such passages. but एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा. आपको समझ में आएगा कि एक्यूरेसी कैसे डेवलप की जाती है. आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली बुक रिव्यू को कैसे समझा जाता है. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बुक रिव्यू, यहाँ पर 2 चीज़ों पर हमें फोकस करना होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड and we need to differentiate between facts and opinions. And moreover, students, when I talk about opinions, now you people see, one is the author of the book. उसने अपनी बुक में क्या लिखा, and second one is the author of the passage who is actually reviewing the book. So many times a student is not able to understand कि आखिर इस पूरे पैसेज में किसका ओपिनियन क्या था. So that becomes a common confusing area, and when we misunderstand that, तो ऑप्शंस को कंपेयर करके आंसर देना बिकम्स टफ फॉर अस. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. बहुत ही मजा आएगा एंड पूरे पेशेंस के साथ. और आज द पैसेज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एक्चुअली बिकम्स अ बुक रिव्यू ऑफ अ बुक रिटन बाय रटगर ब्रेगमैन. ओके, एंड आई गेस ही इज अ जर्मन, स्विट्जरलैंड या जर्मनी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इज अ वेरी यंग हिस्टोरियन. Okay, Humankind is the name of the book, and उसको students review कर रहे हैं, one of the authors. And also understand रटगर ब्रेगमैन ने अपनी इस किताब में बहुत सारे हिस्टोरियंस का रेफरेंस भी दिया. Okay, and that is the reason again you people have to be careful about. अपनी बुक में ब्रेगमैन ने किस किस को रेफर किया, उन्होंने क्या बोला, सेकेंड ब्रेगमैन ने अपनी बुक में क्या बोला, एंड ब्रेगमैन के ओपिनियन पर दी रिव्यूअर्स ओपिनियन. So this is the way we need to understand the differences in the opinions of these people, and then only it is possible to get the correct answer to the questions. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं students, and now we are going to start the passage. So before we start the passage,
if anyone who is interested for CAT 2026, believe me students, this becomes the most appropriate time. हमें CAT 26 के लिए ज्वाइन कर ही लेना चाहिए. मुझे लगता है स्टूडेंट्स मैथ्स आप लोग 6 मंथ्स में 8 मंथ्स में बहुत अच्छा डेवलप कर भी पाते हो, बट व्हेन आई टॉक अबाउट VRC, अगर थोड़ा सा फंडामेंटल अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, एंड स्टूडेंट्स द वे वी हैव carved the courses, the way we have made 2 levels of programs. So one is the basics one and second is the advanced one. Basics में we generally focus more on vocab, grammar, general reading skills, etc. तो यहाँ पर जो passages का level होता है बहुत tough नहीं होता, but basics very important because जितना vocab हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं उतना CAT advanced में we cannot. And students without the basics, I think CAT advanced में नहीं जाना चाहिए. So if you people want कि thoroughly basics भी complete हो जाए, and after that हम लोग advanced पढ़ें. So my suggestion to all the students, yes, the details are there in the description. Otherwise आप comments में से mention कर दें कि I'm interested for CAT 2026. Our team will get in touch with you. Okay, and moreover students, जो 25 के students हैं, at this time कि हम लोग अब मॉक टेस्ट सीरीज पर पूरा फोकस करें, तो इसीलिए एस्कैट का पूरा मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है विद वीडियो सॉल्यूशंस. अब कई बार स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि जब भी अपन पैसेज सॉल्व करें, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चंस. सो आई वांट यू पीपल टू हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आई विल शो द पैसेज टू यू. So the author has differing views from Brigman regarding. The author means what? The author of the passage. That means I am talking about the reviewer here. Okay? उस किताब का ऑथर तो ब्रिगमैन है, लेकिन जो रिव्यू कर रहा है, ओके, उस ऑथर की, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑथर ऑफ द पैसेज. सो द ऑथर हैज डिफरिंग व्यूज फ्रॉम ब्रिगमैन रिगार्डिंग. According to the passage, the collapse of civilizations is viewed by Brigman as. The collapse of civilizations is viewed by Brigman as. इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ऑथर ऑफ द पैसेज का ओपिनियन नहीं चाहिए. We need to have the opinion of Brigman here. Coming on the next. None of the following views is expressed in the passage except that. Okay, in the passage. And fourth, according to the author, the main reason why Brigman contrasts life in pre-agricultural societies with agricultural societies is to. तो आखिर ब्रिगमैन क्या दिखाना चाहते हैं? Okay, इन दोनों में contrast करने का उनका पर्पस क्या है? So that is what you need to find out here. Now students, I am going to show the passage to you. I think it is not a very lengthy passage, but still have a look over. So this becomes the first part and this becomes the second part. अब सारे students जो live हैं वो मेरे साथ इसको पढ़ना start करेंगे, and the students who are watching it later on as a video, I would recommend all the students एक बार pause करके पूरे passage को पढ़ो and then go back on the questions and try to give the answers on your own. But anyway students, अभी मैं लाइव सबके साथ मेरे साथ सॉल्व करेंगे जो भी बच्चे लाइव हैं, एंड लेटर ऑन जो भी स्टूडेंट्स हैं, दिस बिकम्स द फर्स्ट पार्ट एंड दिस बिकम्स द सेकंड पार्ट. तो पॉज करो, समझो, एंड उसके बाद दिस बिकम्स द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड दीज आर द नेक्स्ट 2. ठीक है, चलिए अब अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इस पूरे पैसेज को. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पैसेज, ऑल्दो वन ऑफ द मोस्ट contested concepts in political philosophy, human nature is something on which most people seem to agree. Okay, try to understand. Although one of the most contested concepts in political philosophy, इस पर खूब चर्चा है, लेकिन human nature is something on which most people seem to agree. Human nature. तो first line पढ़ने से पता चलता है कि possibly the main purpose of writing this passage is to talk about human nature. अभी तक स्टूडेंट्स हमको फर्स्ट लाइन पढ़कर ये नहीं समझ में आएगा कि इट इज अ पैसेज बेस्ड ऑन बुक रिव्यू, बट एनीवे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी आ जाएगी. बाय एंड लार्ज, अकॉर्डिंग टू रेडगर ब्रिगमैन इन हिज न्यू बुक ह्यूमन काइंड, वी हैव अ रादर पेसिमिस्टिक व्यू. नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ब्रॉडली स्पीकिंग ब्रिगमैन क्या मानते हैं अपनी नई किताब में? वी हैव अ रादर पेसिमिस्टिक व्यू. पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावाद, negative view, not of ourselves exactly, but of everyone else. We see other people as selfish, untrustworthy, and dangerous.
and therefore we behave towards them with defensiveness and suspicion. तो ब्रेगमैन अपनी किताब में कहते हैं कि हम लोग जनरली नेगेटिव होते हैं, खुद को लेकर भी एंड दूसरों को लेकर भी। खुद को लेकर नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? पॉसिबली हमें सेल्फ डाउट होता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरों को लेकर देखिए, यहाँ पर हम दूसरे लोगों को क्या मानते हैं कि द अदर पीपल आर सेल्फिश। कोई अगर बहुत अच्छी एडवाइस भी देता है आपके, तो भी हमें लगता है कि नहीं यार, इसका कुछ अपना मीन होगा, अंडरस्टैंड, अपना मीन्स होगा। अभी मैं देख रहा था, कल परसों हम लोग इंस्टीट्यूट पर कुछ टीचर्स वी वर डिस्कसिंग, एंड वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट वन तारा ऑफ अनंत अंबानी। तो ये पीपल माइट बी नोइंग अबाउट वन तारा, एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कमिटी बनाई थी okay, to give the report to one tara, is it violating the animal laws or not, and whether animals are kept in natural ambience or not. तो वन तारा पर we were discussing, तो किसी टीचर ने बोला कि सर ये सब जो है ना, ये बेसिकली PR एक्टिविटीज हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा इनका CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, तो इनको यूटिलाइज करना PR एक्टिविटी, एंड कोई ना कोई इनका बिजनेस मोटिव होगा। तो मैंने एक्चुअली कहा टीचर्स को कि इट सीम्स लाइक आई डोंट नो कि व्हाट इज द रियल इंटेंट बिहाइंड डूइंग इट, बट आई सेड कि ऐसा लगता है कि हम लोग आउट राइटली बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। क्या पता कि हो सकता है अनंत अंबानी का और रिलायंस ग्रुप का इंटेंट बहुत जेन्युइनली अच्छा हो, ओके, बट नाउ वी पीपल हैव बिकम सो नेगेटिव, ओके, इवन इफ द इंटेंट हैड बीन गुड, हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, तो मार्केटिंग स्टंट होगा, कोई PR एक्टिविटी होगी। मतलब ऑनेस्टली हम उसका पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं हैं। तो अगेन डिस्क्लेमर, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रू इंटेंट, बट हाउ कैन वी डिस्काउंट इट? पॉसिबली हिज इंटेंट कैन बी गुड एनफ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा काम करना, एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, तो दे प्रमोटेड एज अ रेस्क्यू सेंटर। एनीवे, वन तारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इट सीम्स लाइक, ओके, ट्रू इंटेंट हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट हम पॉजिटिव तो हो ही सकते हैं कि हो सकता है ट्रू इंटेंट जेन्युइनली बहुत अच्छा हो, isn't it? Now see, this was how the 17th century philosopher Thomas Hobbes conceived our natural state to be. Now understand students, एक तो ब्रेगमैन है जिसकी किताब का रिव्यू हो रहा है, and students, this is how the 17th century philosopher Thomas Hobbes conceived our natural state to be, believing that all that stood between us and violent anarchy was a strong state and firm leadership. Students, you people do understand, okay, the way the first paragraph has been written, okay, इसको बहुत ढंग से समझना is very important. Okay, you people do understand. रटगर ब्रेगमैन क्या कहते हैं? We have a rather pessimistic view. इसका मतलब है हम लोगों का व्यू बहुत नेगेटिव है ह्यूमन नेचर को लेकर। इस लाइन को पढ़कर ऐसा लगता है कि possibly Brigman does not accept this opinion. Students, try to understand the way the language has been written. आप लोग गलती मत करना, ये ब्रिगमैन का ओपिनियन नहीं है। ब्रिगमैन कहते हैं अपनी किताब में कि वी हैव अ रादर पेसिमिस्टिक व्यू। इसका मतलब है पॉसिबली ब्रिगमैन डज नॉट बिलीव इन दिस। बट एनीवे, इस पैराग्राफ में लिखा है कि थॉमस हॉब्स का ओपिनियन ऐसा ही था, बिलीविंग दैट ऑल दैट स्टूड बिटवीन अस एंड वायलेंट एनार्की was a strong state and firm leadership. The Thomas Hobbes, he believed in that only. Okay, his opinion was कि हम लोग by birth, okay, bestial हैं, हम लोग by birth violent हैं, हम लोग by birth human nature is very bad, and it is purely because of a strong state and a firm leadership. ये जो violence है, ये जो nature है, ये जो anarchy है, we are able to control it. तो हॉब्स एक्चुअली बिलीव्स दैट कि अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ना हो, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज ना हो, तो ह्यूमन नेचर जो बाय नेचर इट इज वेरी बैड, दैट विल एक्चुअली कम आउट। ओके, तो हॉब्स का बिलीफ ये था। चलो इसके साथ में थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चीजें समझते हुए चलें। देखो, इन सब पैसेजेस को ढंग से समझने के लिए इट एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट यू बिकम एन एक्टिव रीडर। और एक एक्टिव रीडर कैसा होता है? चीजों को पढ़ते पढ़ते वो रिलेट करते हुए चलेगा, अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट से जब हम ड्राइव करते हैं, अगर सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है तो हम लोग भी प्रॉपर लेन में चलेंगे, प्रॉपर स्पीड में चलेंगे,
But the moment we realize that there is no one to watch us, तो हम लोग भी क्या करते हैं? We often start violating the rules, breaking the rules. कहीं से भी निकल जाएंगे, कहीं भी पार्क कर देंगे. Why? Because there is no one to watch. So what does it show? It shows that by nature we are bad. ये तो पुलिस की वजह से, ये तो स्ट्रॉन्ग स्टेट की वजह से देखिए दिस नेचर हैज बीन टेम्ड एंड कंट्रोल्ड. ये हॉब्स का ओपिनियन है. अब क्या और ऐसा होता भी है तो ये ओपिनियन किसी एंगल से गलत नहीं है. अंडरस्टैंड. जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ को पता चलता है यानी वे अब कोई सजा मिलने वाली है नहीं, इतनी भीड़ में किसने क्या किया हु नोस, बच जाएंगे, तो भीड़ क्या करती है? मॉब लिंचिंग भी कर देती है, बड़े बड़े क्राइम्स भी कमिट कर देती है. क्यों? जैसे ही पर्सन को पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है, the bad nature which had been there, the true human nature, okay, the true animal nature which is there within us, that actually comes out. Okay, so students, this becomes the point. चलिए, coming on the second one. देखो, जब मैं बहुत टाइम लेता हूँ ना किसी पैसेज को समझाने में, I do understand this much of time you people don't have while taking CAT. Okay, but students, when I'm taking so much of time, the basic purpose is you people should develop a very good understanding of this particular genre. So we are not taking one passage, we are discussing one particular genre basically, understand? Okay, coming on, but then following Hobbes argues Bregman. अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना, हॉब्स का ओपिनियन क्या है कि बाय बर्थ ह्यूमन नेचर एंड फ्रॉम ओरिजिन ह्यूमन नेचर हैड बीन बैड. द पेसिमिस्टिक ओपिनियन अबाउट ह्यूमन. So Hobbes actually believes in that. But in following Hobbes, argues Bregman, we ensure that the negative view we have of human nature is reflected back at us. So Bregman कहते हैं कि Hobbes को अगर मानते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? We ensure that जो नेगेटिव व्यू है that actually reflects back at us. अगर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया सेल्फिश है और अगर मुझे लगता है स्टूडेंट्स पूरी दुनिया बहुत ही बुरी है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ओपिनियन okay, it will reflect back at us. So that becomes the disadvantage, okay, in following Hobbes. He instead puts his faith in Jean-Jacques Rousseau, okay, the 18th century French thinker, who famously declared that man was born free and it was civilization with its coercive past, social classes and restrictive laws that put him in chains. Wonderful. अब देखो स्टूडेंट्स, रोजियो का ओपिनियन टोटली डिफरेंट है एंड ब्रेगमैन okay, goes with Rousseau. Bregman Hobbes के विचार से एग्री नहीं करते. He goes with Rousseau and he says that. And what is the belief of Rousseau? Okay, who famously declared that man was born free. Hobbes ने क्या बोला था? Man was born bad only. हम actually by nature negative है, but actually Rousseau says that man was born free and it was civilization, okay, with its coercive past, social classes and the restrictive laws that put him in chains. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, बाय बर्थ बाय ओरिजिन मैन बहुत अच्छा ही था. अंडरस्टैंड. ये तो जब से सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जब से सोशल क्लासेस डेवलप हुए, जब से लॉज डेवलप हुए, देखिए दीज थिंग्स दे एक्चुअली बाइंडेड अस, ओके, इन चेन्स. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ओके, नाउ वी हैव एक्चुअली बिकम बैड. सो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम तो फ्री थिंक करते हैं, हम तो लिबरल ही थे. अंडरस्टैंड. सिविलाइजेशन ने हमको बांध दिया. हॉब्स का ओपिनियन क्या था कि हम तो बाय नेचर एनार्किस्ट ही हैं. ये तो स्टेट की वजह से देखिए दिस बैड नेचर गॉट कंट्रोल्ड. So I think you people are able to make out the difference between the two extreme opinions about human nature, which have been given by Hobbes and Rousseau. And Bregman goes with Rousseau. That is the point. Agreed? Yeah. अब इतनी क्लैरिटी के साथ अगर पैसेज समझ में आएगा तो बिलीव मी स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी तो डेवलप होनी है. अंडरस्टैंड. एक्यूरेसी क्यों नहीं डेवलप होती? बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली पुअर. If clarity is not there, but still, if you people pursue giving the answers, make no sense. Hobbes and Rousseau are seen as the two poles of the human nature argument. And it is no surprise that Bregman strongly sides with the Frenchman. That means Rousseau. Okay, अब समझ में आना चाहिए Bregman का opinion क्या है. Understand. So Bregman supports Rousseau. He takes Rousseau's intuition and paints a picture of a pre-Lapsidian idyll
प्री लैब्सिडियन का मतलब बिफोर दैट टाइम, जब से ह्यूमंस एक्चुअली स्पॉइल होना स्टार्ट हुए थे, बिफोर दैट दी pristine, the aboriginal understand. एडल का मतलब बेसिकली अ वेरी सूदिंग प्लेस। ओके, चीजें स्पॉइल होना स्टार्ट हुई उसके पहले का टाइम। एडलिक इन द सेंस, या अभी भी मैं एडल की बात करूं तो विलेजेस को अपन कह सकते हैं। ओके, तो जहां पर बिल्कुल प्योरिटी है तो दैट इज एडल। He takes Rossio's intuition and paints a picture of a pre-Lapsidian idyll in which, for the better part of 3 lakh years, Homo sapiens lived a fulfilling life in harmony with nature. Then we discovered agriculture, and for the next 10,000 years, it was all property, war, greed, and injustice. So Bregman actually believes in that. 15 lakh साल पहले, Homo sapiens, we lived a fulfilling life. Okay, we had harmony with nature. पर जब से एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ और इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखो 10,000 ईयर्स में सब कुछ बदल गया. इट वाज ऑल प्रॉपर्टी, वॉर, ग्रीड एंड इनजस्टिस. So with the advent of civilization, with the advent of agriculture, the things started deteriorating. That is what the opinion of Rossio and Bregman is. जबकि हॉब्स का ओपिनियन कुछ और है. चलिए, coming on students, the next part. It was abandoning. It was abandoning. It का मतलब क्या हो गया? Agriculture. So we are talking about agriculture here. So it was abandoning a nomadic lifestyle and then domesticating animals. Says Bregman. Nomadic का मतलब समझते हैं? ठीक है? When humans were wanderers. Okay, homeless. Understand? Just a second. It was abandoning. Abandoning का मतलब होता है तो give up, छोड़ देना. It was abandoning a nomadic lifestyle and then domesticating animals, says Bregman, that brought about infectious diseases such as measles, smallpox, tuberculosis, syphilis, malaria, cholera, plague, etc. अब इन सब नेम्स को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होना. अंडरस्टैंड, हियर इज वेयर यू पीपल कैन एक्चुअली सेव टाइम. ये तो ठीक है जब मैं समझा रहा हूँ कि मेरा पर्पस कुछ और है. अदरवाइज व्हेन यू टेक सच पैसेजेस एंड कैट, इन सब डिजीजेस को पढ़ना, कई सारी लाइंस को पूरी डिटेल में पढ़ना इज नॉट नीडेड. So don't keep an eye for details. Focus majorly on understanding the idea. And by now, anyway, we have understood the basic idea of writing the paragraph. अब students, you people see, okay, Bregman क्या कहते हैं कि जब से एग्रीकल्चर आया और जब से हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, सारी बीमारियां भी आना स्टार्ट हुई. तो ब्रेगमैन कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन के अगेंस्ट उनका ओपिनियन है. एंड ही सेज दैट कि बिफोर सिविलाइजेशन we were actually in a good condition. This may be true. अब स्टूडेंट समझना, जैसे आप सेंटेंस पढ़ो this may be true, अभी तक तो ब्रेगमैन का ओपिनियन था. अब स्टूडेंट्स बनाए से this may be true. That means now this is the opinion of the writer of this passage. So the writer of this passage is now commenting on Bregman's opinion. He says that this may be true, but what Bregman never really seems to get to grips with is that pathogens were not the only things that grew with agriculture. अब स्टूडेंट्स अब देखो, the author of the passage says, ब्रेगमैन ने एक चीज यहाँ पर मिस कर दी. ब्रेगमैन ने काउंट तो किया कि बीमारियां कैसे बढ़ गई, बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है. अंडरस्टैंड, so did the number of humans. It is one thing to maintain friendly relations and a property-less mode of living when you are 30 or 40 hunter-gatherers following the food. But life becomes a great deal more complex and knowledge far more extensive when there are settlements of many thousands. So you people try to understand this. अब देखो students, the author of the passage says कि ब्रेगमैन एक गलती कर रहे हैं कि ठीक है मान लेते हैं कि बीमारियां बढ़ी है, but at the same time ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ी. And moreover, always to curse civilization is not good, because lakhs of years back when civilization was not there, even the human population was very much limited. तो जंगलों में 30-40 के ग्रुप्स में रहना या 30-40 हंटर गैदरर्स की तरह रहना, ठीक है, that was very much possible. And for that, no civilization, no rules, no culture is needed. But students, you people understand, when the population rises, ठीक है, उसके बाद definitely इसके बिना survival is also not possible. So the author of the passage is moreover justifying the advent of civilization. तो यहाँ पर वो थोड़ा सा डिसएग्री होता है
रटगर ब्रेगमैन के ओपिनियन से. And there is one question which is based on the author of the passage. It does not agree with Bregman in which particular context. But life becomes a great deal more complex and knowledge far more extensive when there are settlements of many thousands. Absolutely. Now see. Civilization has become synonymous with peace and progress and wilderness with war and decline, writes Bregman. वापस से Bregman का opinion. He says that कि civilization को अपन मानते हैं कि it is peaceful and progressing, जबकि wilderness को हमने relate कर दिया war and decline के साथ. But anyway, students, Bregman कहते हैं ऐसा हमने कर दिया, but this is not the opinion of Bregman. In reality, अब students Bregman का opinion. देखो book review में यही तो सबसे बड़ा challenge होता है. In reality, for most of human existence, it was the other way around. So Bregman does not agree with this. He says that it is the other way around. Whereas traditional history depicts the collapse of civilizations as dark ages, okay, in which everything gets worse. Modern scholars, he claims, see them more as a reprieve. Reprieve का मतलब है relief, a break, in which the enslaved gain their freedom and culture flourishes. Students understand. Bregman civilization को बहुत अच्छा नहीं मानते. And that is the reason Bregman says that the traditional historians वो मानते थे कि the period of collapse of civilization डार्क एजेस है. लेकिन ब्रेगमैन जैसे जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, ओके, दे बिलीव दैट द कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन वाज बेसिकली अ रिप्रीव इन व्हिच द एनस्लेव्ड, जो बंधे हुए लोग थे, दे गॉट फ्रीडम एंड कल्चर फ्लरिश्ड. Like much else in this book, the truth is probably somewhere between the two stated positions. Now again, this becomes the statement, this becomes the opinion of the author of the passage. तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये जो लास्ट लाइन है ये इस पैसेज के ऑथर की लाइन है. ही सेज दैट लाइक मच एल्स इन दिस बुक द ट्रुथ इज प्रोबेबली समवेयर बिटवीन द टू स्टेटेड पोजीशंस. एंड व्हिच आर द टू स्टेटेड पोजीशंस? वन, कि सिविलाइजेशन ने ही सब कुछ बर्बाद किया एंड ह्यूमंस जो बॉर्न फ्री थे उसे बांध दिया. सेकेंड ओपिनियन, कि ह्यूमंस बाय बर्थ एनार्किस्ट है, ओके, दे हैव गॉट बैड क्वालिटीज, okay, they are by nature beast-like, and because of civilization, state, laws, etc., we were able to control that kind of nature. But students, the author of this passage says that the reality is between these two extremes. So, अब students, जो last paragraph है, that paragraph will give the complete picture what actually the author of this passage believes in. In any case, the fear of civilizational collapse, Bregman believes, is unfounded. तो ब्रेगमैन कहते हैं कि जो डर है ना सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा, उस डर के पीछे कोई रीजन नहीं है. अंडरस्टैंड, इट इज अनरीजनेबल, अनफाउंडेड. इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट द डच बायोलॉजिस्ट फ्रांस डी वॉल कॉल्स वीनियर थियरी. तो ब्रेगमैन कहते हैं कि ये जो फियर ऑफ सिविलाइजेशनल कोलैप्स है, इट इज अनरीजनेबल. देयर इज नो नीड टू हैव दैट फियर. बट ब्रेगमैन सेज दैट इस फियर के पीछे जो मेन रीजन है ना, वीनियर थियरी. एंड व्हाट इज वीनियर थियरी? कि अंदर सब कुछ बुरा है, सिर्फ ऊपर से अच्छा है. अंडरस्टैंड, इसका मतलब है ह्यूमंस बाय नेचर बहुत ही बुरे हैं, ये तो सिविलाइजेशन ने कवर कर रखा है. दिस इज द वीनियर थियरी. तो स्टूडेंट्स, ब्रेगमैन सेज दैट ये तो इस वीनियर थियरी की वजह से हमको लगता है कि सिविलाइजेशन कोलैप्स नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड, अगर कोलैप्स हो गया तो अंदर सब कुछ बुरा है वो बाहर आ जाएगा. और ब्रेगमैन तो मानता ही नहीं कि ह्यूमंस बाय बर्थ बुरे हैं. दैट इज द रीजन ही सेज दैट दिस फियर ऑफ सिविलाइजेशनल कोलैप्स इज अनरीजनेबल. It is the result of what the Dutch biologist Frans de Waal calls veneer theory. The idea that just below the surface a bestial nature, bestial matlab animal-like nature, is waiting to break out. There is a great deal of reassuring human decency to be taken from this bold and thought-provoking book. Now, students, this becomes the line, the opinion of the author of this passage. The author of this passage says there is a great deal of reassuring human decency to be taken from this bold and thought-provoking book, and a wealth of evidence in support of the contention that the sense of who we are as a species has been deleteriously distorted. Deleteriously का मतलब होता है बहुत ही हार्मफुल तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिया. हम जो बाय बर्थ बहुत अच्छे थे, हमारा पूरा आउटलुक ही या हमारे बारे में परसेप्शन क्या बना दिया कि हम तो बाय बर्थ बहुत बुरे थे. अंडरस्टैंड, और ये किताब एविडेंस देती है अगेंस्ट दिस पॉइंट कि हमने एक्चुअली ह्यूमंस को लेकर जो परसेप्शन था वो धीरे धीरे
हाउ ह्यूमंस वर, इस पूरे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर दिया। ये बुक उसे वापस से एस्टैब्लिश करती है, एंड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज appreciates the book for that. But at the same time, this author has got some reservations also. But it seems equally misleading to offer the false choice of Rossio and Hobbes when clearly humanity encompasses both. So the author of this passage wants to have a balanced outlook. He believes that थोड़ा Hobbes भी सही है, थोड़ा Rossio भी सही है, किसी को नाराज मत करो। But Bregman पूरी तरह से his sides with Rossio. The author of this passage does not agree with that particular thing. So I think students have done justice with this passage. So जिस totality के साथ इस passage को समझना चाहिए, we have actually done it. और students इन classes का purpose उन बच्चों की skills को बढ़ाना नहीं है जिनकी reading वैसे भी outstanding है, okay, जिनकी speed बहुत अच्छी है, who are able to understand and who are able to step into the shoes of the author. But I know around 70-80% of the students who are taking CAT, they struggle in reading. और students, मेरा target उन बच्चों को अगर मैं थोड़ा भी improve करवा पाया आपकी रीडिंग को, तो ये इस CAT का चैनल चलाना स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो बच्चे हमसे पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए हमने जब से पिछले 20 सालों में देयर वाज ओनली वन मोटो कि जो भी स्टूडेंट्स हमें पे करता है, वी विल हैव टू गिव बेस्ट वैल्यू एडिशन फॉर दैट. So if a student is paying money by joining our paid courses, we have to provide the courses which are best value for money. And students YouTube channel पर when we are giving time, we will ensure that कि हमारे जो courses हैं वो best value to time भी होना चाहिए. So this is the intent with which ACAT is working. So I believe that. और आप देखोगे इस पूरे सेशन को जब वॉच करोगे तो पता चलेगा वो इंटेंट दिख जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Now let us take the questions. So the author has differing views from Bregman regarding. Any answer? हमने पूरा passage discuss किया. So the author has differing views from Bregman regarding the role of pathogens in the spread of infectious diseases. Not at all. ये तो author of the passage भी मानता है कि हाँ वे pathogen से बीमारियां फैलती हैं. A civilized society being coercive and unjust? Yes, I think students' second option is the correct answer. Okay, because Bregman clear-cut मानते हैं कि civilized society is coercive and unjust because this is the opinion of Rossio. Okay, कि civilized society ही coercive and unjust होती है and human freedom को control करती है, understand. लेकिन author का opinion उतना extreme नहीं है. Author का opinion balanced है. So that is the reason author इससे थोड़ा बहुत agree करते हैं और थोड़ा बहुत नहीं भी करते हैं. So here the differing views are there. The second option indeed becomes the correct answer. A property-less mode of living being socially harmonious. Okay, property-less mode of living being socially harmonious. I think students ये option आपको बहुत appeal करेगा, but that is actually not the correct answer. Why this is not the correct answer? One, see, Bregman actually believes in this. वही civilization के बाद, agriculture के बाद, property came into existence, और उसके बाद ही war, देखिए जितनी भी social bad qualities हैं, they actually came up. अदरवाइज तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी लेस मोड ऑफ लिविंग वो सोशली हार्मोनियस ही, हाँ ये तो ब्रेगमैन मानते ही थे. एंड इवन दी ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स इन दैट. तभी तो ऑथर ने बोला कि 30-40 हंटर्स जब रहते थे तब हार्मोनियसली रहना वाज नॉट अ बिग डील. तो ऑथर भी कहीं ना कहीं ये मानता तो है कि जब 30-40 हंटर्स थे, प्रॉपर्टी नहीं थी, तो हार्मनी थी, अंडरस्टैंड. इसीलिए सी पर दोनों का ओपिनियन सेम है. The role of agriculture in the advancement of knowledge. The role of agriculture in the advancement of knowledge. Even Bregman believes that agriculture ने हमारे knowledge को तो बढ़ाया, but Bregman agriculture को curse करते हैं because of some other reason. He says that because of agriculture only, people started settling, then property came into existence, and then humans actually got tied with some prejudices, and after that the ideological battles, और ये सब कुछ start हुआ. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर इन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, इसको लेकर ब्रेगमैन कहीं पर भी ऑथर ऑफ दिस पैसेज के व्यू से अपोजिट नहीं है. ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज सेकंड ऑप्शन. एंड किसी भी ऑप्शन पर इफ यू रियली वांट मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूं, यू पीपल कैन टेल मी. ओके, यस यस एब्सोल्युटली. ऑप्शंस विल ऑलवेज बी कंफ्यूजिंग. Okay, options will always be confusing. और वैसे भी ये क्या था ज़ैट का लेवल है, अंडरस्टैंड.
ऐसा मत मान के चलना कि ऑप्शंस कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट आई थिंक इफ अ स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द पैसेज okay so much thoroughly, getting the correct answer will be very much possible. Okay, and indeed even if the questions seem to be easy, but the questions are not pretty easy because हो सकता है कोई बच्चा फोर्थ ऑप्शन मार्क कर दे, बट एनीवे दैट इज नॉट द करेक्ट वन. आप मुझे बताओ जो रीजनिंग में दे रहा हूँ, so when I say second option is the correct answer and when I'm giving the reason here, okay, you just comment on that, you just say that whether you are convinced with this reason or not. So once if you are convinced with the reason, that itself shows that यार किसी भी आंसर के पीछे प्रॉपर रीजन तो होता ही है. ये तो हम हैं कि उस रीजन को समझते नहीं, अंडरस्टैंड. हाँ, मेरे समझाने के बाद भी इफ यू से कि नहीं सर सेकंड ऑप्शन आई डिसएग्री, योर रीजन इज नॉट जस्टिफाइड, तो ठीक है, वी कैन डिस्कस फॉर दैट. बट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एवरी करेक्ट आंसर will definitely have a definite logic and rationale behind it. And that is the test of maturity which CAT does. But it is not the test of English. क्या लगता है ये इंग्लिश का टेस्ट है? जैसे मेरी ग्रामर अच्छी है, वोकैब अच्छी है, मेरा काम हो जाएगा? अरे ये तो बिल्कुल क्रिटिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड. ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर हियर. कमिंग ऑन द थर्ड वन, सेकंड क्वेश्चन. According to the passage, the collapse of civilizations is viewed by Bregman as. Students, don't get confused. Passage को अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा. Collapse of civilizations को कई सारे लोग जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस हैं, they consider as dark ages. But Bregman का ओपिनियन ये नहीं है. Bregman तो इनफैक्ट ये बिलीव करते हैं the collapse of civilizations was an opportunity कि जो enslaved है, they got the freedom and got an opportunity for the culture to flourish. The second option, which is the right answer, a sign of regression in society's trajectory. Collapse of civilization was a sign of regression? No. This was the opinion of the traditional historians, not Bregman. Resulting from a breakdown in the veneer of human nature. ये इसलिए हुआ because veneer जो है वो breakdown हो गया. क्यों हुआ? ठीक है, ऑथर तो इनफैक्ट ब्रेगमैन तो सेकेंड ऑप्शन के साथ एग्री ही नहीं करते हैं. ऑथर तो या सॉरी ब्रेगमैन तो इनफैक्ट ये बिलीफ रखते हैं कि ऐसे कोई वीनियर थ्योरी है ही नहीं, अंडरस्टैंड. ओके, कि अंदर से ह्यूमन नेचर बहुत खराब है, ऊपर से अच्छा कवर कर दो सिविलाइजेशन बनाकर. ऑथर ब्रेगमैन तो इनफैक्ट कहते हैं कि ह्यूमन तो बाय बर्थ ही सिविलाइज्ड है, अंडरस्टैंड. स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन से तो एग्री हो ही नहीं सकता. थर्ड, a time that enables changes in societies and cultures. Yes, third seems to be one of the correct answers. Fourth, a temporary phase which can be rectified by social action. Rectified तो तब होता जब ब्रेगमैन इसको बुरा मानते हैं. ब्रेगमैन तो इसको अच्छा मानते हैं. It is an opportunity for changes to come in societies and cultures. इसीलिए the correct answer is third option. Agreed? Yeah. Coming on, students, question number 3. None of the following views is expressed in the passage except that. Okay, which is the correct answer here? None of the following views is expressed except. So we need to find out, okay, that particular option which has been expressed in the passage. Expressed मतलब directly दे रखा है, understand. Hobbes and Rousseau disagreed on the fundamental nature of humans, but both believed in the need for a strong state. यहाँ तक तो students it has been expressed. But आगे जो लिखा है, both believed in the need for a strong state, there is a difference in opinion here. इसलिए first option is not correct. Bregman agrees with Hobbes that firm leadership is needed to ensure property rights and regulate strife. Okay, Bregman agrees with Hobbes. Bregman does not agree with Hobbes. The author of the review believes in the veneer theory of human nature. Okay, the author of the review, not at all. Author का तो बहुत ही balanced outlook है. So the correct answer is indeed fourth option. Most people agree with Hobbes' pessimistic view of human nature. Most people, ये first paragraph में भी दे रखा है, understand. Okay, अब ब्रेगमैन ने भी यही लिखा है कि majority of the people they agree with the pessimistic view. They consider humans to be pessimistic as being intrinsically untrustworthy and selfish. So yes, fourth option is correct. It is directly given in the first paragraph. Now, according to the author, the main reason why Bregman contrasts life in pre-agricultural societies with agricultural societies is to. तो ब्रेगमैन क्या दिखाना चाहते हैं? वो यही तो दिखाना चाहते थे कि पहले हम कितने फ्री थे और उसके बाद एग्रीकल्चर के आने के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. तो इसीलिए विच इज द बेस्ट आंसर? जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, कैन यू पीपल गिव द आंसर?
यस, किसी का क्वेश्चन है? लेट मी टेक इट. ओके साहिल, पारासमरी पर आप चाहते हो कि मैं कुछ पढ़ाऊं? आज ही मैंने अपनी एक क्लास ली थी हमारे स्टूडेंट्स के लिए पारासमरी पे. साहिल देख, ठीक है, मैं एक दो सेशन तो यूट्यूब पे ले सकता हूँ, बट हमारा एक डेडिकेटेड VARC का भी कोर्स है और रिकॉर्डेड वन. इफ यू वांट कि इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी कमांड डेवलप हो, यू कैन परचेज इट. अदरवाइज होल्ड ऑन, देखिए पॉसिबली डे आफ्टर टुमारो I may take a session on parasamari. Okay, देखते हैं. Fourth, according to the author, the main reason why Bregman contrasts life in pre-agricultural societies. तो क्या आंसर होगा students? Advocate the promotion of less complex societies as a basis for greater security and prosperity. Advocate the promotion of less complex societies as a basis for greater security and prosperity. Bolster his argument that people are basically decent, but doesn't mean decent. Okay, but progress, as we know, it can make them selfish. Absolutely. इस एग्जाम्पल को देने के पीछे पर्पस यही तो है कि अपने आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, कि लोग बाय नेचर डिसेंट होते हैं, but progress, as we know, it can make them selfish. See, highlight the enormous impact that settled farming had on population growth and make the argument that an environmentally conscious lifestyle is a more harmonious way of living. Not at all. मेन ये बताना चाहते हैं कि देखो सिविलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर के साथ कैसे चीजें स्पॉइल होना स्टार्ट हुई. तो इसीलिए स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो बाय दिस द सेशन गेट्स ओवर. आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत मजा आया होगा, बिकॉज ये मजे और इंटरेस्ट के लिए था ही नहीं. बट अगर कोई जेन्युइनली क्रैक करना चाहता है, जेन्युइनली सीरियस है, और जिसको इंसाइटफुल चीजें पढ़ने में और समझने में मजा आता हो, उनके लिए तो आई बिलीव दैट, देखिए, दिस वाज अ ग्रेट सेशन. एनीवे, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया, दिस आई कैन से. चलिए, तो थैंक यू सो मच. ओके, सी यू टुमारो विद सम न्यू एजेंडा. थैंक्स अ लॉट.